हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम वापस आ गए हैं। आज का है डे 5। एक्चुअली आज मैंने एक रैप किया था। आई डोंट नो यू लाइक दैट और नॉट, बट मैं सुनाना पसंद करूँगा। जो सबसे फर्स्ट रैप है मेरा, एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी व्हाट वेरी वेरी क्रिंज। कहाँ गया? कुछ अमेजिंग था। Wait from what is मुझको कोई नहीं सुनने वाला। मेरे हाथ में मैगी मसाला, उसको मैंने मैगी में डाला। ऐसा स्वाद कभी न खाया। फिर मैंने रिएक्ट स्टार्ट कर डाला। जब मैंने उसको ये पढ़ाया, मैगी तेरा दोस्त है, तूने उसको पहचाना क्या? रिएक्ट बोला, मुझको नहीं पता, मेरी जिंदगी में आया नहीं। तो मैंने एक मैगी डॉट जीएस बनाया, उस लाइब्रेरी से रिएक्ट को मिलाया, ऐसा कंक्लूजन करवाया, ऐसा कोरिलेशन बनवाया, ऐसा स्ट्रेट मैरिजन करवाया, ऐसा प्रॉप्स बनाया, उसको समझना कुछ ना आया। फिर मैंने उसको समझाया, रिएक्ट बोला, ओ माय गॉड, तू एक प्रोमो आर्टिस्ट, तू एक promo artist। ये ओह गॉड, इसको मैंने ना पता नहीं, बस क्या बताऊं। बस आज जब बातें करने का मन करता है ना किसी से, सो कुछ भी निकलता है मुंह से। और आज क्या निकल रहा था? रैप निकल रहा था। मतलब मैं भी सोच रहा था कैसे हो सकता है ये रैप आर्टिस्ट, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर खैर कुछ नया किया हमने आज। मैं लाइव हूँ या फिर ऐसे ही मैं अकेला ही गप्पे मार रहा हूँ? हे यार, मैं लाइव तो आ गया ना। हाँ मैं आ चुका हूँ, 1 मिनट हो गया है, और मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा। अरे चल तो रहा है। ठीक है, फिर आप कमेंट में बताना कैसा लगा इसको, माय रैप। तो मैं मोबाइल पे सुन लो कैसा हुआ आवाज। बनवाया, ऐसा स्ट्रेट मैरिजन करवाया, ऐसा प्रॉप्स बनाया, उसको समझना कुछ ना आया। फिर मैंने उसको समझाया, रिएक्ट बोला, ओ माय गॉड, तू एक प्रोमो आर्टिस्ट। बट मैं सुनाना पसंद करूंगा। सो वेल। चलो ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं विथ रिएक्ट। कल हमारा टिक टैक टो का जो कंपोनेंट बेस्ड थिंग्स था ना, वो सब हमारा हो चुका था। आज हम क्या करेंगे, उसकी लॉजिकल यूनिट कंप्लीट कर रहे होंगे, और शायद आपको अच्छा लगे। ओ ओके, आज मैं थोड़ा लाउड बोलूंगा, आज थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सिप ऑफ वाटर। या या चलो छोड़, ज्यादा हो गया रैप रैप। हम यहाँ थे लोन रिएक्ट में, टिक टैक टो का था। देन यार एक्चुअली वो जो था ना पेन, वो काम कर नहीं रहा है। जो इस पे मैं लिखता था ना, आई मिस दैट यार। वो एप्लीकेशन आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ये रहा वो। और मैंने बाकी एप्लीकेशन ट्राई किया, ओ चल रहा है, बट वही बात है ना यार, स्लो। इतना स्लो कैसे काम करेगा यार। तो खैर कोई बात नहीं। क्या हो गया इसको? कितना प्यारा तो था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन। एक कलर एक बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। परफेक्ट। यार स्लो हो जाता है इससे एप्लीकेशन, पता है। कहाँ थे हम? ये इंटरेक्टिव कंपोनेंट बन गया हमारा। ये सब भी हो गया था। प्रॉप्स के बारे में वो देख, वापस एरर आ गया ना। ये प्रॉप्स का इतना सारा तो हो गया था। ठीक है भाई, नहीं कर रहा यूज। अबे समझ नहीं आ रहा। हद नहीं होता है ना, वो बात हो जाती है। तेरे को हटा ही देता हूँ, तू परेशान करेगा बीच में। रिमूव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज। रिमूव मैन, रिमूव। भाई आपको मैं, आई डेंट, इट डिडंट वर्क।
edit. I'm using different Excel. No, did I didn't have using. No, yeah, I didn't work. चलो ये सर भाई मजाक से हटके यार। यार गुस्सा ना दिलाया कर ऐसे। अब कोई ना यार, जिंदगी ऐसी होती है ना, डेवलपर कर ही क्या सकता है। एरर आ रही तो आ रही है, झेलना तो पड़ेगा ही। सर आज कहाँ थे। यहाँ तक अपना हो गया था। ओके, आज हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द गेम। गेम को कंप्लीट करने के पीछे जाएंगे। बाय दिस पॉइंट यू हैव ऑल द बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर टिक टैक टो गेम। टू हैव अ complete game you now need to alternate placing x और o's। मतलब अल्टरनेट, एक बार मैं x प्लेस करवाऊंगा, एक बार मैं वो करवाऊंगा, और जो प्लेस करवाने वाला चांस है उसको मैं वहां पे साइड में स्क्रीन में शो भी कर रहा हूँ। दैट्स मेक अ सेंस कि ये एक्स डालना है कि ओ डालना है, और किस प्लेयर का चांस है वो भी शो होगा ऑन दी बोर्ड। एंड यू नीड अ वे टू डिटरमाइन विनर, और हमें एक जरिया निकालना है जिससे मैं एक विनर डिसाइड कर रहा हूँ। लिफ्टिंग स्टेट अप, लिफ्टिंग स्टेट अप, व्हाट इज दिस। नो इशू, नो इशू। Lifting state up currently, each square component maintains a part of the game state. To check for a winner in a tic-tac-toe game, the board would need to someone know the state of each of the 9 square component. Okay, समझ रहे हो क्या बोल रहा मैंने। Currently, each square component maintains a part of the game. Maintains a part of the game state. Square component maintains a part of the square। यार बहुत गंदा काम कर रहा है। ऐसा करेगा ना मैं ब्राउजर चेंज कर लूंगा, पता है मेरे को बहुत से तरीके आते हैं सुधारने के। नो ब्रदर, आई हैव मल्टीपल ब्राउजर ऑप्शंस। तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, देगा यार। देखा, ये तो काम कर ही रहा है। एक्सटेंशन है मेरे पास इसका। चलो छोड़, अभी एक्सटेंशन फालतू चीजें छोड़ते हैं, अभी काम की चीजें देखते हैं। मेक द बिल्डिंग सेंस। कितना आगे आ गया यार मैं। ये सब हो गया था ना। मतलब हद है यार, छोटी छोटी चीजों के लिए इतना भटकना पड़ रहा है। ये हो गया था। हम्म, ये नहीं हुआ। मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे चलेगा यार तो। ये हो गया था। ये क्लोजर्स वाला हमने कर ही लिया था। एक्सपोर्ट्स वाला भी हो गया था। नाउ यू विल नीड टू पास आई। हाँ ये भी हो गया था। हाँ इसकी जगह हमने फिर वो डाला था ना, एरो फंक्शन से हमने करवाया था, डायरेक्ट नहीं करवाया था। इसका सिचुएशन हमने समझ लिया, ये भी हो गया। नाउ योर स्टेट इज हेडर ऑन द बोर्ड एंड ऑल दिस थिंग। व्हाई म्यूटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। वो डॉट स्लाइस वाला जो लॉजिक था वो ये सब भी तो हो गया। एंड नाउ एक्स एंड जीरोस। डिक्लेयरिंग अ विनर।
Now that the player can take turn, you will want to show when the game is won, and these are number of turns to make. To do this, you all add a helper function, calculate winner. हमें एक हेल्पर फंक्शन बनाना है कैलकुलेट विनर का. Calculate a winner that takes an array of 9 square, array of 9 square for a winner any return and return x or null as appropriate. Don't worry too much about the calculate winner. It's not specific to React. Like यह function है मेरे पास calculate winner square और code const line से मेरे पास ये 0 1 2 आ गया तो विनर हो जाएगा. 3 4 5 आ गया तो 6 7 8 आ गया तो विनर हो जाता है. ठीक है, कोई भी बंदा. और या फिर वो 0 3 6 आ गया, 1 4 7 आ गया, 2 5 8 आ गया तो विनर हो जाएगा. या फिर क्रॉस में जाता है 0 4 8 आ जाएगा तो विनर होगा. और 1 2 3 होता है ना, 0 1 2, हाँ 2 4 6 आ गया तो विनर. मतलब कि इस साइड किसी का बन गया तो विनर हो जाएगा, इस साइड किसी का बन गया तो विनर होगा, इस साइड किसी का सेम पैटर्न बन गया तो विनर हो जाता है. ये तो हमें समझ में आ गया लाइंस, कितने लाइंस है हमारे पास, कितने हाउ मेनी लाइंस दैट वी कैन मेक. ओके, फॉर मेकिंग अ लाइन let I equals to 0, I is less than a line dot length I plus plus const a b c. हमने यहाँ पर एक एरे बनाया है ए बी सी और उसकी वैल्यू हम लाइन ऑफ आई जो एरे की जो यहाँ की लाइन ऑफ आई जिसमें मैंने वो 0 है ए बी सी में मेरे 1 2 3 चली जाएगी, 0 1 2 गई. इफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर ए क्या चल रहा है. It does not matter whether you define calculate winner before or after the board. Let's put it the end so that you don't have to scroll past it everything you edit your component. Okay, you will you will call calculate winner square in the board component handle click. यार ये नेक्स्ट वाला तो हमने लगाया है ना. No, this is create a copy of the things, all the other things. डिस्कस जो हमने किया है वो था इसका. Tutorials you will find a jump. There is also another benefit of immutability. By default, to all child components re-render automatically when the state of parent component changes. This includes even the child component that weren't affected by the change. Although re-rendering is not by itself noticeable to the user, you shouldn't actively try to avoid it. Okay, you might want to skip re-rendering part
a part of the tree that clarify wasn't affected by the performance reasons. Immutability makes it very cheap for component to compare whether the data has changed or not. You can learn more about this in memo. समझ गया. Although हमें आज यहाँ से start करना है taking turn. It's now time to fix a major defect in tic-tac-toe game. The O's can't be marked on the board. Oh, is it really? Yeah. इसलिए हम start करने वाले हैं अपना terminal. That's going to open my programming 2024. This year also be completing in 20, 31, 38 days, and change directory to React, change directory to react.js, ls, mkdir, day 0, not 04, I have something in day 4. ls call this. Run that. If I'm clicking anywhere else, like here, 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 it's only showing what? It's only showing the x, not 0. This is what? This is our main. React Developer Tool में ऐड करना पसंद करूँगा सबसे पहले.
अबे कर तो लिया यार डाउनलोड, कितने पंगे लेने पड़ेंगे इसके लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। पूरा स्टेट मैनेजमेंट। टेकिंग टर्न, अब हम टेकिंग टर्न वाला मेथड यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। एंड इट्स नाउ टाइम टू फिक्स द मेजर डिफेक्ट ऑन द ओ इज नॉट कैन नॉट ऑन द बोर्ड। फंक्शन बोर्ड है मेरा, जहाँ मैं यूज स्टेट बनाऊंगा सबसे पहले। एडिंग दिस, मेरा x is turn, x is next, set x is next. You set the first move to be x by default. Let's keep track of track by adding another piece of state to board component. Okay, ये काम कर सका। Each time player move x is turned, a boolean will be flipped to determine which player does next, and game's state will be saved. You will update the board's handle click function flip the x state. Like सबसे पहले मैं आपको वो डालूंगा, मैं स्टेट मैनेज करूंगा यहाँ से। आफ्टर मैनेजिंग दिस स्टेट आफ्टर मैनेजिंग द स्टेट आफ्टर मैनेजिंग द स्टेट यहाँ से मैं स्टेट मैनेज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन हैंडलर क्रिएट करूँगा, जो मेरा क्या करेगा, बेसिकली इस फंक्शन हैंडलर को कॉल कौन करेगा भाई, वो बाद में देखेंगे फंक्शन हैंडलर को कॉल कौन कर रहा है। एंड इफ इज एक्स, हम नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर हम लगाएंगे ना, समझ पा रहे हो। ओह, ये टाइमलाइन मैंने आज देखा था फर्स्ट टाइम। बेसिकली होता क्या है वैसे, अरे भाई साहब, यो का देख लिया भाई मैंने। Whatever I have changed, what I retrieve block, ना भाई ना, कुछ भी ना छेड़ अभी। ए? अब तो देगा ही ये, वो टाइमलाइन में सारा सेव रहता है तो ना के यार VS कोड, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, ऐसे नहीं जाने दे रहा मैं। कॉन्स्ट एक्स योर चांस ना, लाइक एक्स टी यू आर टर्न, यहाँ पर रख दूंगा एक सेट एक्स टर्न equals to use state
ट्रू, मतलब यहाँ पे मैं अपना एक्स टर्न है, अगर वो ट्रू आता है सेट एक्स टर्न, अगर मेरा एक्स टर्न ट्रू आता है तो एक्स डालूंगा, अदरवाइज ओ डालूंगा। ठीक है, इफ एक्स टर्न ट्रू आता है देन सेट दिस एल्स सेट दिस टू ओ, एंड उसको सेट करने के बाद मैं यहाँ पर सेट एक्स टर्न इक्वल टू फॉल्स करवा दूंगा और सेट एक्स टर्न टू ट्रू करवा दूंगा। शायद हम यही करेंगे यहाँ पर भी। ये यार, ये भी सही तरीका है। थोड़े लॉजिक मेरे भी कच्चे पक्के हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। उन दोनों को यहाँ से सेट कराने के बाद इन्होंने क्या किया, सेट स्क्वायर को हमने नेक्स्ट स्क्वायर में सेट करवा दिया। इसको सेट कराने के बाद हम क्या करवाएंगे यहाँ से, सेट एक्स टर्न को हमने एक्स टर्न का उल्टा करवा देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टर्न, अगर वहां से ट्रू आया तो यहाँ से फॉल्स कर देगा, अगर वहां से फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। वाओ यार, इतना इतना अच्छा सोचना चाहिए यार मेरा ब्रेन। व्हाई माय ब्रेन इज नॉट थिंक इन दिस वे। अब से मैं यही करूंगा, जब मेरे को उसका टर्न आने के बाद इसको उसका वो करवाना है तो उसका ये करवाना है, तो उसमें यहाँ पे इसका लॉजिक तो है कि एक्सपोर्ट डेवलपर्स के लिए आते हैं। चलो ठीक है, धीरे धीरे हम भी सीख लेंगे ना। और दैट्स इट, देखते काम कर रहा है कि नहीं। भाई भाई यहाँ तो शो ही नहीं कर रहा, यहाँ तो सब गायब हो चुका है। यहाँ इसने जज्बात बदल दिया, अपने जज्बात। ऐसा क्या देख लिया इसने यार, डरा दिया क्या मैंने इसको। couldn't find use escape। अरे भाई अच्छा जी, स्पेलिंग मिस्टेक मैटर करता है यहाँ पर एक्स डाल दिया, जीरो डाल दिया। ये क्या चल रहा भाई, जैसे थोड़ी होगा। ये तो मैं जीते जाऊंगा भाई, पूरी गेम की तो मैया बैन हो गया। नहीं ऐसे माँ बन गई ना। यहाँ सब जीतेंगे आज। ये भी जीत गया, वो भी जीत गया, एक बार है ना, दोनों खुश हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अब हम यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शंस, लाइक अगर तुम वैसे हो तो तुम वैसे नहीं कर सकते, वैसे वैसे थोड़ी होता है। लेट्स सी कैसे होगा। Now as you see, click on the different square, they will be alternate between x and z o as you should। yes, हमने क्या यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट किया, जो मेरा इज सेट x is next, x turn, x set x turn।
कुछ भी हो हमने डाल दिया. After that, now you have click on the different and you should do. But wait, there's problem. Try clicking on the same square multiple times. Yes, this is problem. The x is overwritten by O. While this would add very interesting twist to the game, we are going to stick to the original rules for now. When you mark a square with x or 0, you aren't first checking to see if the square already has 0 or 1 value. Oh my god, ये तो हमें चेक करना ही भूल गया. You can fix by returning early. You will check to see if the square is already has 0 or x. If square is already filled, you will return in the click handling function early because it tries to update board state. Okay. अब स्क्वायर के ith पोजीशन में अगर कोई वैल्यू होगी तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे. ओके, समझ गया भाई. if दिस स्क्वायर, हमने स्क्वायर बनाना ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हमने इसको अपडेट कर दे तो फिर अपडेट कर ही देगा, है ना. हम स्क्वायर्स की इसकी ith पोजीशन पर अगर कुछ वैल्यू होगी तो हम रिटर्न कर देंगे. दैट्स इट. नो क्वेश्चन नो आंसर. रिटर्न, जस्ट रिटर्न आवरसेल्फ. ओके ब्रदर. कौन नेक्स्ट स्लाइस, फिर जाकर हम बाद में यहाँ पे स्लाइस करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करेंगे. अब हम चेक करते हैं. सबसे पहले अपडेट तो कर दो. उससे यहाँ से रिफ्रेश एक्स ओ, ये नहीं हो रहा है यहाँ से. अब अपडेट यहाँ से भी अपडेट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ से रिटर्न हो रहा है बस डायरेक्ट. Who is the winner? No one is the winner. अब जैसे जैसे सारे बॉक्स फिल हो जाएंगे, जरूरी नहीं है सारे बॉक्स फिल हो जाएंगे, किसी का अब विनर चेक करना पड़ेगा. नाउ इट्स टाइम टू चेक द विनर. लाइक यहाँ पर मैं सही काम कर रहा हूँ. अब डिक्लेयरिंग विनर. अब विनर डिक्लेयर करने की बारी आ गई है. Now that the players can take turn, you will want to show when the game is won. अब मेरा गेम कब जीत जाएगा. And there are no more turns to make. Okay. To do this, you will add helper function called calculate winner. Okay, हम एक helper function बनाएंगे calculate winner का नाम से. That takes an array of 9 squares, check for winner and return x, 0 or null as appropriate. Don't worry too much about calculate winner function. It's not specific to React. Okay. Calculate winner हमने बना रखा है.
It doesn't matter whether you define calculate winner before or after vote. अब कैलकुलेट विनर कैसे हम, ये लॉजिक है, ये लॉजिकल टू दिस थिंग. I have this const of line. अभी विनर यहाँ पे चेक कैसे करेगा, लाइक एक मुझे हेल्पर फंक्शन बनाना, नॉट कंपोनेंट. आई एम नॉट वर्किंग विद कंपोनेंट, तो इसका स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर. कंपोनेंट का हमेशा, कंपोनेंट फंक्शन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हेल्पर फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. एक मैं हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन कैलकुलेट विनर. यहाँ पे स्क्वायर्स लेकर आऊंगा. अब जो भी यहाँ पे विनर को कॉल करेगा, लाइक विनर कौन है, हमेशा विनर कॉल होगा यहाँ से शायद, ये हमेशा कॉल करेगा और वो सेंड क्या करेगा, कॉलिंग विद देयर करंट स्क्वायर, और स्क्वायर की क्या क्या वैल्यूज है उस स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट होगा. ओके, अब इस स्क्वायर्स का कॉन्स्ट लाइन बनाऊंगा. लाइक विनर कैन बी लाइक हॉरिजॉन्टली विनर बन सकता है 0, 1, 2 के साथ, या फिर अगर किसी का साइन 0, 1, 2 हो जाएगा, या फिर 3, 4, 5 के साथ हो सकता है, या फिर मेरा 6, 7, 8 के साथ बन जाएगा. यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. नेक्स्ट हमारा विनर कैसे बन सकता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बन सकता है. अब ये वर्टिकली कैसे बनेगा, 0, 3, 6 के साथ बन जाएगा, 0, 3, 3, 6 के साथ बन सकता है. देन it may be with 1, 4, 7 के साथ बन जाएगा, या फिर 2, 5, 8 के साथ बन जाएगा, 2, 5, 8. एंड लास्ट with 2 horizontal, 2 what, 2 diagonals, and diagonals can be like 0, 4, 8 और 0, 4, 8 के साथ बन जाएगा. देन फर्स्ट राइट डायगोनल होगा और लेफ्ट डायगोनल होगा क्या, 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6. यहाँ तक सब सही है. 2, 4, 6, 0, 4, 8, 2, 5, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 6, 2, 5, 8 आ रहे हैं यहाँ पे, 2, 5, 8 आ रहा है, हाँ. एंड 1, 4, 7, 1, 4, 7. All the things are similar, so we are right. Yes, this all are the cases to making themselves as a winner. Okay. Now, what we are going to do right now?
Basically, now it's turn to understanding this logic. This for loop, but this for loop it's I equals to 0 and I is less than lines dot length, ठीक है, कॉन्स्ट ABCD यहाँ से लेकर आ रहा है एक छोटा सा अपना एक A B और C की वैल्यू यहाँ पे लेके आ रही है। अब स्क्वायर ऑफ A, like let me tell you what is this. This is much important. Like this is one of the JavaScript property concept of JavaScript. What is this in JS? Basically, it's transforming the one in this line. JavaScript used to destructuring assignment, a feature introduced in ECMA 6 in 2015. Alright, and explanation इसका क्या है? तो let me share you thing like जैसे line है मेरे पास 1 2 3 XYZ ट्रू फॉल्स नल, ओके, ये इन्होंने एक एरे बना रखी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए के अंदर क्या वैल्यू रखनी है, इसकी ये वाली डालनी है, बी के अंदर ये डालनी है और सी के अंदर ये डालनी है, समझ रहे हो? या फिर मेरे को ए के अंदर एक्स डालनी है, बी के अंदर वाई डालनी है और सी के अंदर जेड डालनी है, ऐसा सीन है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा कि मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर दूंगा। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है ना ब्रो, अब इस स्ट्रक्चर फॉर्म के डेटा को मुझे डीस्ट्रक्चर करना है। अगर मैं इसको डीस्ट्रक्चर करूंगा तो ये टूट जाएगी और मेरे को वहां पे बट के आ जाएगी। लाइक अमेजिंग थिंग है यार। लाइक देख, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने 1 रखी है, मतलब हम इसको फोकस कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन दिस एरे, ओके। एंड जैसे मैंने डिस्ट्रक्चर यूज किया सेकंड एरे के अंदर, लाइक डिस्ट्रक्चर दी सेकंड एरे, सेकंड एरे को हमने डिस्ट्रक्चर करना है और मुझे उस वेरिएबल्स को किसके फॉर्म में, टुकड़ों में डालना है, ए बी और सी के फॉर्म में डालना है, ओके। अब मैं यहाँ पे जब मैं एक्स ए लॉग ए करूंगा, बी करूंगा, सी करूंगा, तो मुझे यहाँ से ये वाले डेटा यहाँ से मिल रहे होंगे। कितना अमेजिंग चीज है यार, मजा आ गया देख के। पता है तुमको की पॉइंट क्या, इफ आई इज अ fewer than 3 element, the remaining will be undefined, okay. If I is not literal, it will throw a type error, okay, समझ गए? चलो ये अपना जावास्क्रिप्ट वाले में भी डालते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, कॉपी करो, यहाँ जाओ, यहाँ अपना कुछ और रन हो रहा है ना, एक और क्रिएट कर लो यार, टेंशन की बात नहीं, बहुत है हमारे पास राइट्स। चेंज डायरेक्टरी, लेट्स चेंज डायरेक्टरी टू प्रोग्रामिंग 2024, चेंज डायरेक्टरी टू रिएक्ट, चेंज डायरेक्टरी टू जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस में जाना है ना, ls code with this, that's it। हम यहाँ आ चुके हैं, हम इसको कट कर चुके हैं, एक हमें न्यू फाइल बनानी है, इसका हमें पाथ पता है, .js लिखना है, ds, file folder name place choose different, अबे क्या प्रॉब्लम है इसको यार, इससे मतलब जिंदगी में एरर आ रहा है, मतलब कुछ भी आएगा, मतलब यार मैं फाइल का नाम ही बोल रही, ये नहीं डाल सकते भाई, तू कुछ और डाल।
मतलब लोपर वाले काम। कॉन्स्ट डेटा है मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल एरे ऑफ डेटा है। लाइक इसमें मेरे पास कुछ नंबर्स के फॉर्म में डेटा है 1 2 3 5 आगे कोई बात नहीं। और इसके अंदर मेरे पास कुछ कैरेक्टर टाइप डेटा है एक्स वाई ओ जी, और इसके अंदर मेरे पास कुछ बूलियन टाइप का डेटा दूंगा मैं। बूलियन नहीं दूंगा, पहले मैं स्ट्रिंग टाइप दूंगा एप्पल। ओ माय गॉड, बेनिन। और यहाँ लोग नहीं वो नहीं बोलूंगा। एंड लास्ट वन इज, क्या लिखूं मैं, स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को मैक्सिमम होगी तो। क्या लिखूं बता। हाँ, वाटर मेलन। अब दैट्स इट यार, इतना क्या करेंगे लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे डेटा का डिस्ट्रक्चर करना है। लाइक लेट मेरा ए बी सी ऐसे लूंगा क्या मैं? ना ना, हाँ ना, ऐसे लेगा, जिसके अंदर मैं क्या कर डेटा का फर्स्ट लगी सेकंड पार्ट मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया 0 1 2। जब मैं यहाँ पर लॉग करूँगा, लॉग ए बी सी करूँगा ना, लेट मी शो यू व्हाट विल बी आंसर। क्लियर स्क्रीन कर दिया भाई तूने। उसके बाद क्या होगा, नोड देखा क्या है मेरे पास आंसर। अबे जल्दी आ जाए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक बार आंखें खोल के देखिए, ठीक है, आंसर क्या है। साइड एप्पल बनाना ये ठीक है, स्पेलिंग से ये ठीक है। एंड देखिए एप्पल बनाना एंड वाटरमेलन, यहाँ से मेरे को डिस्ट्रक्चर कर दिया मैंने ए और बी और सी के अंदर। और जब मैं यहाँ पे ए बी सी को प्रिंट कर रहा हूँ तो एप्पल बनाना एंड वाटरमेलन, ये एक मार्क 6 में आया हुआ था। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर देंगे। अगर मेरा स्क्वायर ए के अंदर जो है वैल्यू का मजाक है, ए के अंदर जो वैल्यू है और वही वैल्यू एक्स बी के अंदर भी होनी चाहिए। वही वैल्यू अगर मेरा सी के अंदर भी है तो सारे वो क्लियर हो जाएंगे, तो रिटर्न कर देगा क्या, स्क्वायर ए अनलेस नल। सिंपल लॉजिक है यार, इतना शांतिपूर्वक लॉजिक मैंने आज तक नहीं देखी। लाइक हमने यहाँ पर लेट आई इक्वल्स टू 0 डाल रखा है मैंने। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने क्या फिट कर रखी है यार, कितना जाएगा अब आगे, 0 डाल रखी है। एंड मैंने क्या रखा है
कि I is less than line dot length। क्या कर रहा है यार प्रिंस, छोटी छोटी लॉजिकल भूल रहा है, मारूंगा तेरे को यहीं पे। एंड आई लाइन कहाँ से आ गई, इधर आई है भाई, लाइन नहीं है भाई। एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब हमें डिस्ट्रक्चर करना है। कॉन्स्ट ए बी सी के अंदर मेरे को डिस्ट्रक्चर किसको करना है, लाइन ऑफ आई का। अगर मेरा लाइन ऑफ आई डिस्ट्रक्चर हो गया, इफ स्क्वायर्स जो मेरे को यहाँ से मिलेगा, अगर उस स्क्वायर्स की वैल्यू ऑफ ए हो, ए हो, और उस स्क्वायर्स की वैल्यू ए इक्वल हो, फर्स्ट वाला हो उसका इससे इक्वल हो और उसके इसको इक्वल हो। मतलब ये करना है कि ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाला थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये केस जीत जाता है। अगर या फिर कोई भी सीन क्रिएट होता है, 0, 3 और 6 तीनों इक्वल हो तो विन हो जाएगा, 2, 5, 8 इक्वल हो जाए तो विन होगा, और जिसकी करंट चांस होगी वो विनर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ बी के साथ तो विनर हो जाएगा वो, या फिर स्क्वायर्स ऑफ बी इक्वल हो जाता है स्क्वायर्स ऑफ सी के साथ, तो फिर रिटर्न स्क्वायर्स ऑफ ए। रिटर्न नल, अदरवाइज हमने क्या रिटर्न कर देना, नल। ओके, दबा के ठोको लाइक एंड सब्सक्राइब। ये क्या मजाक होता है यार, ऐसा थोड़ी मिलेगा। दबा के ठोको, घंटी का बटन दब जाना चाहिए वो भाई। सो व्हाट आई हैव लेट आई इक्वल्स 0, आई इक्वल्स लेंथ ऑफ राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम और तुम दोनों। अब हमें इस कैलकुलेट विनर को कॉल करवाना है। जो कैलकुलेट विनर, आई थिंक कॉल बताओ कौन करेगा, यहाँ से कॉल होगा। It doesn't matter whether you define this before and after the board. Let's put it end so that you don't have to scroll past it every time edit your component. You will call calculate winner square in the board component. Components handle click function to check if the player has won. You can perform this check at the same time. You check if player has clicked a square that already has been X or 0. You would like to return either both case. Okay,
What does mean? समझा नहीं मैं. To let. Now I require to check, calculate winner from here. Like if I entered here and checking square 0 or 1, और वो ऑलरेडी फिल हो या फिर कोई विनर बन जाए, तब तक वो चांस नहीं कर सकता. Squares and another thing will happen. Const winner equals to calculate winner squares and let status and I require to make one more div here. Div class name with status and sharing the status here. Status, this status is this one. इसमें जो भी वैल्यू है कि मेरे को स्टेटस पे शो करना है एंड स्टेटस पे मुझे क्या शो करना है दैट्स डिपेंड्स ऑन द विनर. ओके, इफ कोई मेरा विनर निकल के आता है तो वो सिनेरियो बन जाएगा. अगर कोई विनर नहीं निकल के आता है तो मुझे एल्स में बताना है अभी चांस किसका है. स्टेटस इक्वल्स टू नेक्स्ट
player is x लेंगे या फिर o लेंगे। अब यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, जिस टर्नरी कंडीशन जो करेगा क्या, x टर्न, मतलब x टर्न किया है यहाँ से, ये दिस वन। अगर ये ट्रू होता है देन x की चांस होगी, अगर फॉल्स होगा तो o की चांस आएगी। नेक्स्ट प्लेयर, ओके। अगर ये ट्रू जाएगा देन x की चांस जाएगी, अदरवाइज ये फॉल्स की चांस जाएगी। ये ट्रू गया देन मुझे x प्रिंट करवाना, अदरवाइज मुझे o प्रिंट करवानी, एंड दैट्स इट। ओके, समझ गए। अगर मेरा कोई विनर डिसाइड हो गया तो मैं स्टेटस पे क्या शो करवाऊंगा, स्टेटस इक्वल टू विनर, कौन बनेगा मेरा, इज विनर। अब विनर क्या रहे, विनर इज माय विनर, जो यहाँ से रिटर्न करके आएगा वो मेरा विनर बन जाएगा, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट प्लेयर इज एक्स। एक और मैं यहाँ से स्टेटस को अपडेट कर देता हूँ, मैं app.css में जाके कलर वाइट एंड margin bottom 50 pixels. Next player is x, x we like here. Next player is o, next player is x, next player is o, next player is x, winner x बन गया। अब मैं अगर कुछ और क्लिक करूंगा, यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है। अगर यहाँ पर कुछ विनर डिसाइड हो गया है देन अगर मैं यहाँ पर कुछ क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। अब ये कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, जो हमने यहाँ पे लॉजिक बनाई थी। यहाँ पर जो हमने क्या लॉजिक बनाया था, हमने जैसे यहाँ बनाया हुआ था ना, लेट मी शो यू। अगर मेरा कोई विनर डिसाइड होता है तो मुझे कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, रिटर्न कर देगा। फिर कुछ भी अगर रिटर्न विनर डिसाइड हो गया, अगर नल, अगर यहाँ पर नल आ रहा है, नल आ रहा है मतलब कि वहाँ पर विनर डिसाइड नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। अगर यहाँ पर नल आएगी, अगर यहाँ पर वैल्यू इज एम्प्टी, इनिशियल वैल्यू मैंने सबकी एम्प्टी डाल रखी है ना, नल, ये भी नल है, ये भी नल है, नल या फिर नल, तो ट्रू हो रहा है तो रिटर्न कर देगा। ओके, अगर एक भी डिसाइड हो गया, लाइक वहाँ पे पहले से वैल्यू है, तो फिर कैलकुलेट नहीं करेगा नल। ओके, ये अपना था पूरा टू डू लिस्ट। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप किया, अच्छे से किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक बहुत ज़्यादा लॉजिकल वेज था। हमने बहुत से लॉजिक्स यहाँ पर खुद से क्रिएट करने की कोशिश की एंड वी रियली एंजॉयड।
Let's take a sip of water for this occasion. Congratulations! You now have a working tic-tac-toe game, and you have just learned the basic of React too. So you are the real winner here. Thank you. Here is what the code should look like. Yeah. Adding time travel. Like अब हमें time travel add करना like we are going to at that position have a game. As a final exercise, let's make it possible to go back in time to the previous move in the game, storing a history of moves. If you muted the squares array, implementing time travel would be very difficult. However, you used slice to create a new copy of the square array after every move and treated it as immutable. This will allow you to store early past versions of squares array. This is a magic. और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे and that's become a thing. And navigate between the turns that have already happened. You will store the past square array, another array called history, which you will store a new state variable history array represents all the board state from first of the last move and has a shape like this. Okay, lifting state up. You will now write a new top level component called game. Okay, to display a list of past moves. That's where you will place a history state that contains entire game history. Placing the history straight into the game component will let you remove the square state from the child bold component, just like you lifted state up. Okay. From the square component into the board component, you will now lift it up from the board into the top level game component. This game, this gives this This gives the game component full control over board's data and lets it interact the board to render previous turn from the history. First, add game component with export default. Have it render the board component of the sum makeup. अब मैं क्या कर रहा हूँ एक गेम कंपोनेंट बनाऊंगा जो मेरा मेन कंपोनेंट होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेम रिटर्न कर देंगे हम गेम डेव उस डेव के अंदर मेरा क्लास नेम गेम बोर्ड मेरे पास बोर्ड कंपोनेंट रहेगा देन डेव क्लास नेम गेम इन्फो ये मेरी हिस्ट्री आ जाएगी लिस्ट के फॉर्म में एंड दैट्स इट
चलो क्रिएट करते हैं। जो मेरा गेम बोर्ड है, ये मेरा वन ऑफ द कंपोनेंट बनने वाला है, तो इसको मैं डिफॉल्ट से मैं डायरेक्ट, जैसे मेरा स्क्वायर था, बोर्ड था ना, वैसे बोर्ड ये भी बन जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट game. This is my what? This is my what? This is my uh, main component or called game component. Return the div dot uh, game, and that game has something inside this div. I have game board div dot game board. Inside this game board, I have board component, and I have one more component inside it, game game history. Inside list I have unordered list, I have order list, and inside this order list I have multiple to dos or called multiple list items. Okay, I have multiple list items here. I don't know what talking about. Expected, oh, function. Sometimes I don't know what kind of mistake I'm working with. बहुत खतरनाक मिस्टेक करता हूँ मैं सच में.
Note that you are removing export default keyword before board declaration and adding the before declaration tells index director to file the game component the top level component instead of board component. Additionally, div returns by the game component are making room for game information and download data. Okay. Add some state to game component to track which player is next and history of the moves. Const x is next, set x is next. State to true. After that history के लिए बनाना है जो एक empty array ले लेगा const history set history use state array of 9 element to fill with none. After this number of things, we're going to working with history and x next turn. Since fill is an array of single item which itself is array of nulls. To render the squares, oops, you would want to read the last square array from this history. You don't need use state for this. You already have enough information to calculate the during rendering. Current square equals to history is a history dot length minus 1. Next, create a helper play function inside the game component that will be called by the board component to update the game. Pass x is next, current square and handle as props in the board component. X is the next, इतना कुछ हो गया हमारे पास. Then current squares equals to history में से जो मेरा current square होगा ना ब्रो वो मैं लेकर आऊँ. But current square length minus 1 वो तो last वाला ही आएगा.
अरे लास्ट तो नल ही है, करंट स्क्वायर तो नल आएगा ना, तो नल ही में सेंड कर दूंगा यहाँ से। इसके स्क्वायर हिस्ट्री में से हिस्ट्री डॉट लेंथ -1 after this. Next, next create a handle play function inside the game component that will be called by the board component to update the game. Pass X is next create scale and handle play as a props to the board component. Okay. Export default function game const x is next, x set next true, then this all the thing. Function handle play next square. अब ये कौन करेगा हैंडल? Okay. अलग लेवल की चूसले बन रहे हैं हिस्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए। बैक ट्रैक क्यों करवा रहे हैं तो ये पता नहीं। करंट स्क्वायर इक्वल्स टू हिस्ट्री डॉट लेंथ, मुझे समझ आ गया। ब्रो अब हम बताओ क्या कर रहे हैं। अब बोर्ड में से ये हट जाएगा, इसका हो गया मेरा टाटा बाय बाय, क्योंकि हम बोर्ड में से स्क्वायर्स और उस जो 4-5 चीज़ें यूज़ कर रहे थे वो अब हम यहाँ से सेंड करवाएंगे फ्रॉम दिस, यहाँ प्रॉप्स के थ्रू करवाएंगे। ओके, यहाँ से हम क्या क्या सेंड करवा रहे हैं अभी, यहाँ से करवाएंगे अब बोर्ड के अंदर हमारे साइड से क्या जाएगा, x is next, x is next। Before that, what boards demand? बोर्ड हमसे डिमांड क्या कर रहा है? सबसे पहले बोर्ड को चाहिए एक्स टर्न चाहिए मुझे, टर्न। देन उसको मेरे से क्या चाहिए, स्टेटस मैं लेकर दे रहा हूँ स्क्वायर, स्क्वायर्स चाहिए उसे। देन उसको और क्या चाहिए, स्क्वायर्स के बाद उसको चाहिए क्या, ऑन प्ले, ऑन प्ले हैंडलिंग, लाइक ऑन प्ले का वो काम क्या करेगा, नेक्स्ट स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर किसका चांस है, नेक्स्ट किसका चांस है,
वो मैं यहाँ से हैंडल करके दे रहा हूँ। हैंडल प्ले, नेक्स्ट प्ले, ऑन प्ले, यहाँ इसको दिए क्या। अब इसके अंदर मैं ऑन प्ले बनाऊंगा जो यहाँ पे सारा गेम बना के देगा इनके लिए। ओके, अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ बोर्ड को मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ से, x turn equals to x is next, turn equal x is next, एंड स्क्वायर्स में करंट स्क्वायर लेके दे रहा हूँ, स्क्वायर्स इक्वल्स टू जो भी मेरा यहाँ से करंट स्क्वायर्स लेकर बन रहा है वो मैं यहाँ से दूंगा। और एक नया ओपन प्ले मेकर, बिफोर गिविंग आई वुड लाइक टू क्रिएट दिस हेल्पर फंक्शन, फंक्शन हैंडलर है ना ये, हैंडल क्लिक। अब ये हैंडल क्लिक में दूंगा यहाँ से। हैंडल क्लिक कैसे नहीं दे रहा यार, हैंडल क्लिक के साथ व्हाट आर द थिंग वी आर गोइंग टू गिविंग हियर। वो हैंडल क्लिक का क्या करेगा ऑन प्ले में, नेक्स्ट किसका स्क्वायर आएगा वो वहां से ऑन क्लिक करेगा, नेक्स्ट स्क्वायर ऑन प्ले, ऑन प्ले यहाँ का फंक्शन होगा। और जो क्या करेगा, अब ऑन प्ले मेरा यहाँ पर गेम प्ले होगा, लाइक जो मेरा वहाँ का लॉजिक होगा ना मैं उठा के शायद यहाँ ला रहा हूँ या फिर क्या करूँगा, लेट्स सी। मुझे भी इतना क्या नहीं है। ऑन प्ले इक्वल्स टू हैंडल क्लिक, जो यहाँ से लाकर दे रहा हूँ। ये सब मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या सेंड किया मैंने यहाँ से प्रॉप्स सेंड किया किसको, बोर्ड को। अब बोर्ड एज अ प्रॉप्स एज अ पैरामीटर वहां से ले रहा है। अब इसने ऑन प्ले को यूज नहीं किया, बट लेट्स सी कैसा सीन रहता है आगे का। यहाँ तक होने के बाद लेट्स मेक अ बोर्ड कंपोनेंट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द प्रॉप्स। अब मेरा जितने भी बोर्ड के कंपोनेंट्स है किसकी बात, प्रॉप्स के बेसिस पे कंट्रोल कर रहा है, लाइक दैट्स ऑल आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉप्स। जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड के साथ प्रॉप्स सेंड कर रहा हूँ दैट्स मेकिंग अ लॉजिक कि नेक्स्ट टर्न किसका है, ऑल ऑफ द थिंग्स सारे यहाँ से बन के जा रहा है। लाइक दिस गेम डेवलपमेंट teaches me how to create a React application from the core part। जो उसका core part है, जो main part है ना, वहां से create करो, then circle को बड़ा करते जाओ, then adding new branches, new tree, all these things। हमें सबसे पहले फूल पत्तियां नहीं बनानी, we are not required to making the layout, we are first required to making the branch like state management and the props management। ये दोनों हो गया, देन उसके ऊपर मूव ऑन करो, एक नया लेयर डालो, उसके बाद एक और लेयर डालो, उसके बाद एक और लेयर डालो, एंड मेकिंग समथिंग बिग एंड एडवेंचरस। ओके, दैट्स अ थिंग दैट रियली वांट टू लर्न। इसीलिए एवरीवन इज लर्निंग टीचिंग रिएक्ट, बट नॉट इन दिस वे। And let's make this board component fully controlled by the prop it receives. Change the board component to take these three props like x next, square, and the new onPlay function.
All right. Fully controlled by the prop, it receives changes the board component to take three props or properties. X is next, square and the squares and this all the thing, and a new on play function that board can call with the array update square array when player makes a move next or remove the first line of the board function the call use state. And function board squares on click handle click of I. So replace the set square and set x next. Call the handle click in the board component with single call. Single call to your neo on play function so the game component can update the board when the user click a square. And click the square. Now replace the set square and set is next. Now replace the set squares and set x next call in handle click in the board component with single call to your new play on play function so the game component can update the board when the user click a square. अब मुझे बोर्ड के अंदर कुछ मजाक किया करनी पड़ेगी लाइक अब मेरे पास यहाँ पर सेट स्क्वायर और सेट एक्सटर्न तो है नहीं बट आई हैव सेट एक्सटर्न ऑन प्ले एक फंक्शन है जो एक हैंडलर यहाँ से करके देगा वापस से हम इसको उसके अंदर डाले रहेंगे ओके on play with what on play with next squares with next square and that's it और on play मेरा एक फंक्शन है और जो भी पैरामीटर्स आएगी ऑन प्ले को मैं कर रहा हूँ प्ले विथ पैरामीटर्स एरर तो देगा मुझे थोड़ा छोटा सा एरर देने वाला है और ये बोलेगा कौन सा पता है कौन सा एरर देगा इन्फिनिटी जाएगा देखना मेरे को पता है ना द बोर्ड component is fully controlled by the props to it in the game component you need to implement the handle play function in the game component to get the game working again. What should handle play do when called? Remember,
The board used the call set square with the updated array. Now it is passes the updated square array to on play. The hand the handle play function. Okay, we are just using to handle play, not handle click. Handle play function needs to update game state to trigger a re-render but don't have set square function that you and call anymore. You are now using history state variable to store this information. You will want to update history by appending updated squares array as a new history entry. You also want to toggle X is next and the board to be used like this. जो मेरा previous history था वो and उसके अंदर मैं next square star जो मेरा x टर्न होता था ना उसका opposite and जो मेरा history है जो वो मैं update कैसे करूँगा हिस्ट्री के अंदर एक नया हिस्ट्री डालने है लाइक हिस्ट्री विद अब मेरे पास नया हिस्ट्री कहाँ से आएगा नेक्स्ट स्क्वायर अब मेरे को नेक्स्ट स्क्वायर इसके अंदर ऐड ऑन करना है अब ये क्या कर रहा है फंक्शन लेट मी शो यू जो मेरा हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस डेटा है उसके अंदर मैं एक्स एक जावास्क्रिप्ट का एक और कंसेप्ट है ये लेट मी टीच यू व्हाट इज दिस जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये the expression this is used to spread syntax to create a new array by combining the content of existing arrays समझ रहे हैं भाई combining the content of the existing array history with new element next square here's is a breakdown like this three dot spread operator expands history array effectively copy all its elements into new array
It does not modify the original array. Instead, it's create a shallow copy, just like that I dot shell is doing. Dot what slice. Okay. Next square क्या था? This is a new value or variable that you are appending to the array created by spreading history and wrapper everything in the square bracket and making it one. Like this is my history. I have next squares is like this and I want to update with this and this will be updated like this. Okay, समझ गया भाई. Spread syntax. We are using spread syntax here. जो भी मेरी हिस्ट्री होगी ट्रिपल डॉट हिस्ट्री है उसके अंदर एक नया कंपोनेंट डाल दूंगा मैं नेक्स्ट दैट्स इट एंड जस्ट it's the beginning of the new era of my learning. Wow, yeah, we are like, let me tell you how is it going on. Just we have created this null, and I have multiple array. Let me taking a more easier example for you. So easy example, so easy. Like what I'm trying to do. Like const num equals to 1, 2, 3, and second array has num of 4, 5, and 6, and next array has 7, 8, and 9, and and I want to add new array. Const new array equals to 12, 13, and 14, or 50, 64, 65, not 65, it's 64. My favorite number 64. Yeah, okay. And I want to add this new array in the num array. And array is a list, is a, array is the storing the multiple array inside their array. Okay, so how I can do, I'm just using the null. What I'm going to do, I'm just using the, I'm creating a new array. Const updated update num.
And update num is going to what? And going to adding and creating a new array with spread syntax, just like this. Triple dot for all the elements inside the num, and adding last element just like new array. And when I console log num new array and updated num, let me show you. First of all, clear my screen using CLS. Oh, clear screen. Okay. Now node and spread.js. That's it. This is my wait. This is my num with multiple array 1 2 3 4 5 6 7 and 9. Just I have seen here. Okay. And this is my new array, and I add this new array at the last of the updated array. In that way, I have used this concept here to updating my history of my game. All right, hope you understand how it's going on. We are just updating our history. That's amazing. Actually, React JS totally based on their fundamentals. If you want to become a best React JS developer, I trust. I'm also learning. Every concept of JavaScript is very important. Every single and deep understanding of every concept, like spread, promise, and closures, and all these things. Like amazing, yeah. Now, this is a chance to updating our game history. So let's read more further. Here, this creates a new array that contains all items in history, followed by the next squares. You can read history spread syntax enumerates all the items in the history. All right. For example, this is all the thing. Example वो दिए रखा है. Then this I have just discussed all. At this point, you have moved the state to live in the game component. As we just moving all our states and props, just I have created multiple props for this board game, this board, and इन सब में जो भी हमने यहाँ पर पहले जो use state बना रखा था, what are the use states and hooks that we were created here, we just moved to new component, moved all these states to new component game. This is my new main component for our application. Okay, here I have just created all the history. Now it's time to adding and moving further. Okay, showing the past move. अब हम यहाँ पर रेंडर करवा के साइड में यहाँ पर इस गेम के यहाँ साइड में अपना पास्ट मूव शो करवाएंगे. अभी तो एरर देगा ही मेरे को. अरे भाई, इतना गंदा एरर नहीं चाहिए मुझे. इसने तो गेम ही गायब कर दिया मेरा. सो लेट्स सी अब एरर कहाँ से आया है और क्यों आया है. हाँ, ये सही है. परफेक्ट. राइट. ओह माय गॉड.
Inside the game. Okay. All these things are working properly, but let me move this to for. Turn is not defined. 58. Line number 58. Line number 58. ओ क्या बोलूं अब मैं अपने आप को. ट्रू है यार ये ट्रू. दैट्स इट. जस्ट एरर. क्या खतरनाक सा था यार. व्हाट. अब मेरे को पता है मुझे क्या बोलना चाहिए अपने आप को. सो नेक्स्ट प्लेयर. अब भी ये सुधरेगा नहीं. मेरे को एरर दे रहा है. शाबाश बेटे शाबाश. ओ भाई. इस 22 एरर. नो इशू नो इशू नो इशू. एक साथ लाइन नंबर 16 में क्या दे रहा है. स्लाइस इज नॉट अ फंक्शन. क्यों भाई. लाइन नंबर 16. स्लाइस इज नॉट अ फंक्शन एंड स्क्वायर. ये क्या मतलब हुआ इसका. स्लाइस इज नॉट अ फंक्शन. हाँ पता है मुझे फंक्शन नहीं है. सो व्हाट शुड आई डू. 16. नेक्स्ट. स्क्वायर. Squares dot slice. दर्द दिलों के कम हो जाते. Oh, I'm just using like this and returning all this. And next square is my array data type. Okay, and is not a function. Yes, this slice is not a function. Slice is a function or not a function. Understand array. Oh, thank you. बहुत मदद कर दी आपने. टाइपस्क्रिप्ट square or slice is not a function. At handle click on square click.
Uh, uncaught type array square slice is not a function. ये सिंपल से स्लाइस करके इसमें सेंड ही तो करेगा यार उसको एक्चुअली यहाँ भी क्या कर रहा है यहाँ पर तो वही कर रहा है नेक्स्ट स्क्वायर्स डॉट स्लाइस now it's turn to make something big. Yeah, adding time travel. All right. यार error. Slice is not a function. The error slice is not a function occurs because the variable square is not an array or an object that implements slice method. Is it so? Squares
स्क्वायर्स को मैंने यहाँ से कॉल तो किया था ब्रो, मैंने सेंड किया किया वैसे। अभी करंट स्क्वायर एंड करंट स्क्वायर तो यहाँ पे क्रिएट हो ही रहा है ना। Was it? What is this? What is the type of current square? Actually, this is defining my error. The type of current square depends on the value stored in the history. Hey, array. Let's break it down. Ascending an index, the element of history determine the type of current square. History dot it's a 60 error. यार लास्ट अपडेटेड वैल्यू मेरे को शो करके देगा। ओके, दैट्स माय एरे। वही एरर तो मैं वहां सेंड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर स्टोर क्या करा रहा हूँ मैं? हिस्ट्री के अंदर मैंने 9 एरेस मैंने फिल करवाए हैं। अब इसको फिलिंग मैंने सही करवाया था कि गलत? सही करवाया, आई थिंक सो। फिल नल एरे of 9 dot fill null use state। ये तो मैंने सही करवाया, एरे मैंने करेक्टली बनाया है और हिस्ट्री को मैंने करेक्टली वहां से अपडेट कर रहा हूँ। देन प्रॉब्लम कहाँ है? बैक ट्रैक करो ब्रो, बैक ट्रैक। देख, रूट तो यहाँ से आ रहा है। मैं इतना चिक चिक नहीं मांगता, मेरे को शांति से अपना काम करके दे। तो मैं क्या करेगा? करंट हिस्ट्री, करंट स्क्वायर के अंदर मेरे पास स्क्वायर्स हैं। अब करंट स्क्वायर मैं यहाँ सेंड कर रहा हूँ एज माई स्क्वायर नेम। वे इज दैट? ये मेरा स्क्वायर्स है, इस स्क्वायर्स में मैं करंट स्क्वायर डाल रहा हूँ। अब इस बोर्ड का तो करंट स्क्वायर है, अब चेक हो रहा है। अब उस स्क्वायर की कॉपी मैं नेक्स्ट स्क्वायर में डाल रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्क्वायर को मैं अपडेट कर रहा हूँ, फिर उसको मैं नेक्स्ट। 1 मिनट, जब मैं नेक्स्ट स्क्वायर को
अपडेट कर रहा हूँ। करंट स्क्वायर में डाल दिया। अब मैंने इस नेक्स्ट स्क्वायर को यहाँ से अपडेट कर रखा। हाँ,
There is nothing inside this. एरर यहाँ पे आ रहा है फिर मतलब. If your interaction is to keep history of state for tracking moves in game, you need to initialize array history and instead of flat array of state which.
जिंदगी बहुत मुश्किल है यार। इतना आसान थोड़ी एरर फाइंड करके निकालना यार। छोटी सी एरर भाई, इतना सिली मिस्टेक्स करता है यार भाई प्रिंस तो। कैसे चलेगा बताओ। स्टिल सेम एरर। ये काहे इतना परेशान करते हो भाई। क्या करूं मैं।
Your code has couple of issues that need to be addressed, be analyzed step by step. Issue with board component prop. In board component you incorrectly destructure the props instead of. ओ माय गॉड, एज अ ऑब्जेक्ट में वहां से सेंड करता हूँ ब्रदर। छोटी छोटी चीजें भूल रहा है तू यार भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुमने स्क्वायर के अंदर जितने प्रॉप्स सेंड किए थे, तब तुमने कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर सेंड किया था ना। जब भी प्रॉप सेंड होता है कंपोनेंट के अंदर तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाता है। दिमाग में डाल दे यार, ये छोटी सी चीज है। ऐसे फालतू के एरर्स लेकर नाइटमेयर बना रहा अपना। React passes props in single object to component. If you don't destructure the prop correctly, the component won't receive value properly. React passes props as a single object component. If you don't destructure properly, that's not received in proper way. And next error, what? Missing array check. You added a debug statement, okay? If the log false, it indicates the square is not an array. This is unexpected because squares should always be in array derives from history. Ensure handle play is updated history correctly. If square is still not an array, ensure current square is derived correctly. Improper. Wow, now it's working properly.
Take a sip of water, brother. Mhm. Now, next word is this: showing the past movie moves. Since you are recording the tic-tac-toe game history, you can now display a list of past moves to the player. React elements like button or regular JavaScript object. You can pass them around your application to render multiple items in React. You can use array of React element. Array of React elements. You already have a number of history moving in state now. So now you need to transform it to an array of React elements in JavaScript to transform one array into another. This you are recording a TikTok. You are using map to transform your history to move React element representing button on the screen uh, and display a list of button jump to the past move and the move of the history component like function to jump to do कुछ तो करेगा ये and const move game info में हमें moves करवाने हैं like how many moves that I did game to be started. Now I'm going to making now I'm going to making a move function jump helper function
jump to. This is not trying to make it jump. Jump to function. I'm going to do something. Now I have to mix this like this is a move. For every moves I require to make a description inside the list of written. Game info. Okay, what is the output of this move that's coming from here and giving multiple options here. अगर मेरा move is greater than 0, then go to move hash, then move number is like index number is 1 2 3 4 whatever like that, like move 0 starting from 0, and this go to start game to be start less than and game to be start and returning all list. Okay, I understood. I'm going to using this move where the move is coming from. That will be the const move. Move equals to, we have changed the whole value, not the single value. Move equals to history dot map. In this map I have square and the moves have squares and move. Here I have to check if move is greater than 0, then let description equals to what we do, go to move hash, go to move hash plus move else description equals to start your game. That's it. And every time I require to return this return. I require to making a list item which have the access list item button on click. The jump function will be worked on with some description. On click पर मैं jump function को move करवाऊंगा and taking the move from here. Okay, बटन के अंदर तो मैं description डाल दूंगा and
on click मैं jump 2 को करवाऊंगा with some move, and that move is coming from here inside that single map. I'm just working with this. That's it. What an amazing logic here. इससे खतरनाक अच्छा लॉजिक में आज तक नहीं देखा सच में. Description, start your game and now let me explain what jump function is going to do. Like whenever I call the jump, that's going to set the next history to the index of that. Start your game. For the jump,
As you iterate, through history, array inside the function you pass to map. The square argument goes through each element of the history and move around goes through each element of 0 and list move your indexes. Okay, for each move in tic-tac-toe game history you create a list of list item which contain the button and the button history. The button has an on-click handler which calls a function called jump to that you haven't implemented yet. Okay. For now, you should see list for the move occur game and error of the in the developer tool console. Let's discuss the error means. Okay. Passing key. Now I have to pass the new key for each. When you render a list, React stores some information about each render list item. When you update a list, React needed to determine what changed. You could have added, removed, rearranged, or update the list item. Imagine the transmission of Alexa 7 tasks left, ban 3 5 tasks left, to ban 9 tasks left, code flex 8 flex, and Alexa 5 tasks. In addition to update the count a human reading, this would probably say that you swap the Alexa and Waze orders and insert the collection and the Waze. However, React is a computer program and does not know what you interacted. So you need to specify key property for each item to determine each item from its sibling. If your data has from database, Alexa band and database ID could be your key. Okay, like list item with the key user.id, like username, user.task, and left. Okay, these all are the things. When a list is re-rendered, React takes each item key and search the previous item, then matching the key. If the current key has a key that doesn't exist, React create a new component if current list is missing a key and the previous list. React destroy the previous component if two key match the corresponding key is moved. Key tells React about identity of each component, which allows React to maintain state between re-renders. If component's key changes, the component will destroy recreate with new state. Key is a special and reserved property in React, which when an element is created, React extract the key property and store the key directly on the returned element. Even though key may look like a passed as a props. Yeah, it's just like a props that I have just created. Uh, Something like a prop. Just it's not exactly the props, but something like a props. Okay. React automatically use key to decide which component to update it
there is no way for component for task what key is parent and specified. It's strongly recommended that you assign proper key whenever you build dynamic list. Okay, if you don't have a appropriate key, you may want to consider restructuring your data so that you do. If no key is specified, React will report an error and use the array index as key. Use the array index as key by default. Array index number is by the key as by default like 0, 1, 2, 3, 4. Using array index as a key pro- problematic when tapping to reorder listing item and inserting removing list item. Explicitly passing key I slices the error but has same problem as array indices and is not recommended to most of the cases. Key does not need to be globally unique. They only need to unique between component and their siblings. Okay, there is a no restrictions like a key should be like 1, 2, 3, 4, 5 and only the unique key. No, it's should be unique from their siblings. Like every sibling, every card, and every element of that component should be unique key. Every small components like that I had just created earlier. Okay, let's take a sip of water. So now, starting with one more thing, implementing time travel. In tic-tac-toe game history, each part move has unique ID associated with it. It is sequential number of move
Moves will never be reordered, deleted, or in- inserted in the middle. So it's safe to use move as index key. Okay, move number, move first, second, third, fourth. Okay, that key will be like that. Okay, in the game function you can add list item key of this, and if you reload the render game, react key error should be disappear. Okay, let's try it. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Key equals to move. It's magic. It's magic. Hey, it's the winner. It's the winner. Oh my god, there is no error. We just conquer it. We just add the key value here to making all the siblings unique to each. Like every component of React has unique ID of component that's basically makes sense to making things unique, so that React can understand what the things are created newly. Or let me show you the React developer tool, but it's not working here, it's working somewhere else, but that is very slow. Hope so it's work. Take good wishes from God, like, please, it's work. It's not working for me. Oh, it's work. Okay, let me show you the magic, real magic of React developer tool. Where is that? Where is the in setting? No, not in setting. It will be where? In memory, application, lighthouse, reloader, source, console, element. Yeah, I don't know where is that. I think I missed out. Let me do this. Control Shift G. Nothing happened. Oh, it's open the console, but it's not working with my. No, download the React Developer tool for a better development experience. Yeah, I just downloaded it, but it's not working here. Even I downloaded for Edge, Firefox in every browser. Let me show you for my Chrome browser, as I'm using React application console for the hidden setting. I don't know why it's not. React developer extension. Show, show me. I don't know what's happened. Not available. I missed that. Last day I have used, but today is not. Yeah, here is that. Is it so? Is it that component? Oh, thank God, thank God, thank God. It's showing me like in the game, in the game, I have used states like array of states.
In every states I have multiple all the things like this. ये काम कैसे कर रहा है? जैसे मान लो मल्टीपल एक्स है, यहाँ पे एक्स डाला एक्स आ गया, स्टेट मैनेजमेंट चल रहा है। ओके, एंड ओ इज द विनर। जैसे मेरा एक विनर डिसाइड हो गया, व्हाट आर द थिंग इज लाइक हियर, मेरा हर एक बोर्ड का मेरा अलग से स्टेट बन रहा है। स्क्वायर बेसिस पे, लास्ट स्क्वायर बेसिस का मेरा स्टेट होगा ये। ओके, एंड एवरी null, no entry. Okay, like this is what I'm trying to show you earlier. Average states are showing me here. Like this, it's amazing. Okay, okay. Now it's time to updating the jump to. What's jump to really does? Really does. Really does. Before you implement jump to, you need the game component. You need the game component to keep track of which step the user is currently viewing. To do this, define new state variable called current move defaulting with 0. Okay, current move like which what is the use of that? Before you implementing jump to, you need the game component to keep track for each step the user keep track. Jump to, you need the game component to keep track of which uh, uh, keep track of which steps the user is currently viewing. Okay, keep track all the users. Hmm. Current moving, set 0. Next, current move, next move, set current. Update the jump to function inside the game. To update the current move, you will also set x is next to true if a number that you are changing current move is to be even. क्योंकि हमें उस सिचुएशन में क्रिएट करना है कि अभी चांस किसका पड़ेगा, उस मूव में किसका चांस आया होगा एट दैट टाइम, हमें वही कर रहे हैं। करंट मूव से हम वहां पे वो पता लगाएंगे, एंड फिर गेम प्ले में हम क्या करेंगे, उस करंट मूव को जो भी सीन बनेगा, हैंडल प्ले नेक्स्ट, फिर कुछ और सिनेरियोस हम उसको अपडेट कर रहे हैं। ओके, इतना पहले करते हैं। हमें करंट मूव स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट करंट मूव सेट करंट मूव to use
state to 0. स्टार्टिंग हम उसकी करंट मूव मैंने 0 डाल रखी है, so that the state is at the 0th position. Okay. Whenever the user came here and clicking on the move, and my current move will be setting to what as a next move. जो भी मेरा वहाँ पे next move jump to क्या मेरे को send कर रहेगा. Next, update the jump to function inside the game that update the current move. You also set x or to x if current move equal to next move. Actually, I want to update the current move, or you can say like and if that move if next move वाले चांस में अगर वो इवन आया कि ऑड आया तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि ट्रू या फॉल्स. अगर वो इवन नंबर पर है देन वी आर गोइंग टू शो 0. अगर ऑड नंबर पर है देन वी आर गोइंग टू शो what at that time we are going to show something else. Okay, at that time set item if it will be like uh, if next move is divided by 2 and gives even, if it's even like it's true or false. It's true or अगर वो even होता then true है तो वहाँ पे set move true कर देगा, and it's false then it's set to false. That's it. You will now make two changes to games handle play function, which is called when you click on square. If you go back in time and then make a new move from that point, you only want to keep the history up to that point. अब मुझे हिस्ट्री को रोल बैक भी करना पड़ेगा. Instead of adding next squares after all the times spread structure in history, you will add it after all item dot slice 0 to current move plus 1, so that you are only keeping the portion of the old history. Each time a move is made, you need to update current move to point the last history entry. Like समझ रहा है? Like whenever you are going to clicking your any move, like I want to jump into this move, जिससे मुझे उस मूव में जंप करना और बाकी के नीचे सारे मूव्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ. एट द टाइम मेरे को जो मेरा न्यू हिस्ट्री क्रिएट होगा उस टाइम मेरे को सारे प्रीवियस स्टेट्स को डिलीट करना है. क्या मैं इस प्रीवियस स्टेट डिलीट करूंगा या प्रीवियस स्टेट को मैं नया सेट कर रहा हूँ. एक्चुअली उस हिस्ट्री वाला वो जो स्टेट का कंडीशन था उसको मेरे को नीचे लेकर आना पड़ेगा. लाइक लेट मी शो यू हियर. जब मैं नया मूव क्रिएट करूंगा, लाइक
जब मैं न्यू क्लिक करूंगा कि मुझे अब यहाँ से फोर्थ मूव पे जाना है, ओके, मुझे यहाँ से फोर्थ मूव पे जाना है। अब फोर्थ मूव में जो मेरा स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है वो मेरा अपडेट कर देगा एज अ, और ये मेरा यहाँ पर यहाँ शो करने लगेगा इस वाली जगह 9th प्लेस पर, ओके। अब इस 9th प्लेस पे वो शो करेगा। अभी तो मेरा यहाँ पे वॉन हो गया, गेम जीत गया ना मैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे वो कर रहा है। अगर मैं गेम नहीं जीता होता तो शो लाइक दिस x0 x x 0 x, and next is, oh, there is nothing, no one is winner. I have used all the moves but no one is winner. I have used all the moves but no one is winner. It's mean that I lose the game. And for this time, I want to go back to fifth move. Back to fifth move. I want to go back to the fifth move. और जो मेरा फिफ्थ मूव पे जो मेरा डेटा है, ये वाला डेटा, वो मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लास्ट मूव में, वो मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर इस जगह से मेरा न्यू गेम स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी द मेन थिंग। और जब मेरा यहाँ पे गेम नया स्टार्ट होगा, ये सारे मूव्स नीचे से वो डिलीट हो जाएगा या फिर नया मूव उसी जगह क्लिक स्टार्ट होगा, वो हमें देखना है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। ये मेरा करंट मूव है, वहां तक की हिस्ट्री को मैं स्लाइस कर रहा हूँ। करंट मूव में मैं एक्चुअली डाल के रहा हूँ नेक्स्ट मूव, और नेक्स्ट मूव के अंदर जंप टू नेक्स्ट मूव, और जिस मूव को वो जंप करना चाहता है उस मूव की जो डेट स्टेट आएगी, उस स्टेट को मैं अपडेट कर रहा हूँ उसमें। फिर मैं हिस्ट्री में से उस करंट मूव की डेटा, ठीक है, हिस्ट्री में स्लाइस क्या करूंगा, वहां से लेकर के बस वहां तक का स्लाइस मैं वहां से कैच आउट करूंगा, जीरो से लेकर के उस जगह तक की स्लाइसिंग करूंगा मैं, उस जगह तक की कॉपी करूंगा, उसके बाद का नहीं, ओनली टू दैट, ठीक है। वहां से लेकर स्लाइस करूंगा मैं जीरो से लेकर के करंट मूव -1 तक मैं
करंट मूव तक करूंगा, +1 डालूं ताकि उसका -1 मेरे को मिल पाए, ठीक है। करंट मूव तक मैं स्लाइसिंग करके नीचे के सारे डेटा हटा दूंगा और फिर मैं उसको न्यू हिस्ट्री से अपडेट करूंगा और करंट हिस्ट्री को मैं अपडेट करूंगा नेक्स्ट हिस्ट्री डॉट लेंथ -1। ये बात होगी और फिर मैं नेक्स्ट हिस्ट्री का वो नेक्स्ट इसेट भी कर दूंगा अपडेट। अब मैं क्या करूंगा, जंप टू में हैंडल प्लेयर, हिस्ट्री को सारी हिस्ट्री के अंदर नहीं डाल रहा मैं, जो मेरा करंट मूव शो करेगा ना ब्रो, उसके बेसिस पर मैं यहाँ पे काम करवाऊंगा। अब हिस्ट्री डॉट स्लाइस 0 से लेकर के करंट मूव +1 तक का मैं लूंगा, उसके बाद में ये नेक्स्ट स्क्वायर डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया, ओके। सेट हिस्ट्री, मेरा हिस्ट्री इस टाइप का क्रिएट करेगा और मैं हर बार में सेट हिस्ट्री तो डाल ही रहा हूँ। अब नेक्स्ट हिस्ट्री बना के करना है या फिर डायरेक्ट सेट हिस्ट्री कर लो, बात तो सेम ही है ना, उसको डायरेक्ट उसमें डाल रहा हूँ, बात सेम ही होगा। एंड ओके, बात सेम नहीं होगा। नेक्स्ट हिस्ट्री नेक्स्ट हिस्ट्री ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री नाम सही तो नहीं लग रहा। हिस्ट्री इक्वल्स टू हिस्ट्री डॉट स्लाइस 0 to current move +1, then next squares, then next history। एंड अब मैं क्या अपडेट करने वाला हूँ, करंट मूव। अब करंट मूव मेरा नेक्स्ट हिस्ट्री बन जाएगा, ओके। सेट करंट मूव नेक्स्ट हिस्ट्री डॉट लेंथ -1। ओके ब्रदर, नेक्स्ट हिस्ट्री डॉट लेंथ -1, ओके।
Finally, you will modify the game component to render the current section move instead of always rendering the final move. Okay, current square to history dot current move. Current square equals to the history of the current move. 9. And if you click on any step of the game, the detective board should immediately update the history of current move.
state 1, 2, 3, and I want to moving my state to this second state, and when I click here, it's changing the third state. Okay, changing the third state. Now it's state management becoming easier. Like whenever the user click here, like 0, our users got to be here. Now, if user want to redirect to the first state, like like here, I want to go back to my first state, and the scenario is like this. And when I click here, now the new states got changes. Wow! Start your game, clear all your states, and when you click here, it's similar. Like when you clear state, and when you click here, it's amazing. Okay, and when someone click here, 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 uh, here, 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 X is a winner. That's it. And I don't want to make X to win. I want to make O to be win. I go back to my seventh state and giving a chance O to win. Now O is a winner. So wow, we are able to manage all the states in amazing way. Thank you React Docs. It's amazing. जो भी हमने किया that's really workful and that's really fruitful for us. Now for the final cleanup. Now it's chance time to clean up like all the unnecessary codes we are going to clean up. If you look at the code very closely, you might notice that X is not exclusively true when the current move is even, and X is next to X is false when the current is odd. In other word, if you know the value of current move, then you can always figure out the X isn't next or should be. Like every even chance, like my first
whenever I used to start my application, it's showing the next pair is X. It's already showing next for the first position, like odd. For even, it's showing false O. For even position, it's showing O, and for the odd position, it's showing X. It means that whenever my state is true, it directly setting the value as, what is that? Oh, don't like this. Whenever my state is false, is setting the value. It's setting the value from the props, from the board props here, and it's setting the value to X when it's true. When it's false, it's showing the value to O. It's mean that O is whenever the move is even, and the X is false when the move is odd. All right. Hope you understand what I'm trying to say. Now it's time to understand the game again and manage our state. So, wait. First of all, clean up this, like, what's it really want to do. There's no reason for you to store both these states. Yes, there is no reason. Likely, I'm handling the state for this using from here. Like, I'm directly uh, managing our state, move state for from here. Like, if it's odd or even, directly there's no need to using this thing, like, what, in the board there's no use of this, like, turning. So we're going to clean up for this. Like how? Let me show you. In fact, always try to avoid redundant state. Redundant matlab, it's mean that reusing your state multiple times. Simplifying what you store in the state reduce bugs and make your code easier to understand. Okay, change game so it does not store X is next as a separate state variable, is instead figure it out based on the current move. Okay, and the thing, you no longer need X is state declaration call X is state next. Now there is no chance for X is state in out of sync of the current move, even if you make mistake while coding or components. Wrap up. So let me do one thing. First of all, as my state or called, like this state, it's showing true, it's become false. Now it's time for O. Now it's become true for X. Now it's become false for O. Now it's become true for X. It's become false for O. So this is happening. If I, and I'm not using what is that, this thing, and and but if I'm not using this, how the state will be managed out? That's become difficult for me. There is no means what they trying to say. So leave that. My code. Oh no. Can't no, because already stored. Okay, yeah, it's all fine. I think all good. Let's play the game.
Hey, anyone is live right now? Anyone is live right now? I would like to interact with you. I would like to interact with you for this game. It take 30 seconds to interacting with you. Okay. So you are the player X. You are the player X. Now it's your chance where you want to put your X. Give two number. First number will decide the row and the second number decide your column. Okay. Comment in live button. You see live chat below. Below you will see live chat. I think one candidate is available here. Kindly, this session will be interactive for me. Please send row and column number. Hey, I'm sending you something. Hey, are you here? Are you able to listen me? At least you could send an emoji. At least you could send an emoji, please. So no issue, no issue, no issue. I understand you're slipped out. Okay, let's say if I put the X here, now my array of states be stored like this. As I put the X for the first state or the first box. Okay. Next time, if I put the X where, you can guess. You would like to guess O. So no issue, no issue, no issue. Putting it over here and put the X here. O X O X O X. No one is won. No one won this game. No one is winner. But I want to make someone to winner. O X O Oh, X become winner. It's amazing. So it's time to end up this game. I hope you enjoyed very well to this till here. Tomorrow I'm going to start with thinking in React. Okay, this also becoming this become very easy for us now. Everything is becoming easy for us. Like we spent lot of time to making the tic tac toe game with in in depth. We understand lots of concept of Java, JavaScript, and lots of concepts of React.js like state management, props management, and component, and all these things. That's really worked full for us. So, guys, it's time to saying good night or goodbye, Shubhratri, happy day, happy
wish you a new day for your life. Okay, so it's 3:33. It's Shubh Muhurat to end up this lecture. So, tata, bye bye.